हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल ही बहुत अमेजिंग है। आई वेंट टू इंडिया स्केरियस्ट फेस्टिवल ओनली फॉरेनर। तो ये किसी फॉरेनर का व्लॉग है और ये ओनली फॉरेनर का मतलब है कि वो अकेले फॉरेनर उधर मौजूद थे वहाँ के लोकल्स में। इंडिया के काफी फेस्टिवल्स का हमें पता है, जैसे होली, दिवाली, ईद वगैरह और भी है, रक्षाबंधन। हाँ। तो ये स्केरियस्ट फेस्टिवल ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मुझे सुन के इतनी हैरानी हो रही है। भूत वगैरह आते होंगे। देखते हैं, ये तो हमारे लिए भी न्यू और फॉरेनर कैसे पहुंच गया। हाँ, क्या पता चला। और बाकी ये टाइटल हमारे लिए भी बड़ा न्यू होगा। काफी इंटरेस्टिंग, हमारी आंख से कैसे छुप गया। इतना अच्छा हो गया रिएक्शन करते हुए, और ये चीज नहीं हमें पता। तो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली हमेशा की तरह अमेजिंग, एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Every person around me hasn't eaten for 41 days and they're in a crazy state of trance. If you're into weird, wild, and bizarre rituals, don't go anywhere as I take you to a festival in Southeast India. This is the most intense human emotion you'll ever see in your life. Scariest extreme festival. Right now I'm literally at the southernmost tip of India. When you see the coconut trees behind me, it feels like Thailand or the Philippines. We have the mountains in the distance, the Indian Ocean's right there. So the mission right now is after we fill up our car, we're going to drive 4 hours to the area where the festival is going to take place. This video is happening totally spontaneous, on a whim. I don't know who we're going to meet, but I got the goosebumps because it's going to be freaking epic. Immediately thrown into the chaos here on the street, trying to make sense of everything. You know you're in the countryside of India when the sign is not in English, because everybody here speaks English. Dussehra is a vibrant Hindu holiday that celebrates good over evil. The people here go all out, cross-dressing to resemble the goddesses and fasting for 41 days to prepare their bodies 41 days की fasting. No eating. Already fasting 41 days. Over 100,000 people have come here to worship, and everyone is telling me that I'm the only foreigner they've ever seen at this festival. We are hopping in a rickshaw to take us to some outer villages here. We just found our first devotee here on the side of the road, and he's all dressed up. You look very nice. You can see people just chilling outside their houses. They're getting ready, they're getting dressed. Are you from here? कैसे मेकओवर किया From हुआ? Chennai. You came from Chennai for Dussehra here. इंग्लिश जानते हैं? That's a long time. पाकिस्तान में नहीं है। What's going to happen here? India The में। festival. What does that mean? देवी माता We're walking around the villages here and they're starting to get in the spirit. And you can see this guy, he has a double nose ring. He's got the thing coming from the hat and it's going inside of his nose. Dussehra Chendur is the epicenter of Dussehra, but it's also celebrated all around India. Depending on the region, you might find different traditions. But here, you can see men worshipping goddesses while giving blessings and taking donations. But things are about to get pretty wild. I have no idea what is going on right now. But I'm being followed by these people with the hand. बड़ा यूनिक अपने आप में। ये हम भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। We're going. This guy is going around his village, drinking coconut, smashing it on his head, and being really aggressive. And I asked him why. He just says that's how monkeys act. अच्छा, वो मंकी डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना। That was a total mind. If that has any indication from what we're about to see the next few days, it's going to be insane. Day 2 festival. It's early morning, so everybody's kind of standing around, eating breakfast, and pretty soon they're going to start getting Banana dressed leaf, for banana? the main event, which is happening later today. English? Speak English? Hindi? It's really interesting. The people here, they don't speak English or Hindi, they just speak Tamil. Almost everywhere else I've been in Tamil Nadu India, mein you can communicate with English, or you can find someone that speaks English, but here, it's very difficult. In this temple right here, everybody's starting to get ready, get prepared. You can see it's not just a quick thing. It takes many hours to dress up. They even have the bras on, they have jewelry, they have lipstick. It's like the full thing. How do you feel? Good. The goddess Kali represents death and destruction. You can recognize her by उनकी her blue माता face है वो paint and जो है, many hands. What I find interesting is how cross-dressing as a means Religion of worship expected. can also provide an outlet for Indians who don't बड़ा identify with खर्चा traditional gender. बड़ा खर्चा We होता have होगा। Mohel. Him इतना and his whole कलर और family are इतना about to start कॉस्ट्यूम। getting dressed for the main event. It's so fascinating how the entire house here turns into a makeup studio. These are just some of the costumes that the kids and the adults are going to be wearing here, which take up a large portion of the house. कितना कलरफुल सा लग रहा है ना सब Beautiful, कुछ। beautiful. This guy looks Female like a बनाया mixture of Freddie Mercury and Sacha Baron Cohen, but more like Freddie Mercury. Look, you.
You look like him. Same. 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 I'm with Madhuhashini, and she speaks perfect English, and so far she's been a lifeline for helping understand what's going on. How old are you? 10. You're 10. You speak the best English here. Thank you. So I want to know, how do you feel that you're putting all this makeup on and you're getting all the dress? How does it make you feel? They're putting the traditional, though they're not feeling anything. What god or goddess are you dressing as? Muttaram. Mataram? Muttaraman. Mataraman. Can you explain what happens during Dussehra festival? They are just praying for what we have to think that have to be true. That's why they are just putting like this get-ups. The men here, do they enjoy dressing as women? Yeah. In my country, if a male dress as women, they're considered to be gay or transsexual. Is it the same here? They are not like this and that. This is a festival for everyone. Okay. Anything you do in India is colorful, whether it's holy लड़की festival बड़ी or just अच्छी रही यार, walking down the मेरे street. And this is another example of that. Explain. Everything is colors. It's very festive. बाकी colors का बहुत use है. The sound of drumming captures my Music. attention as people rush towards the temple. I have no choice but to chase the mob and weave through the crowds. I have no clue what's going on. कितने लोग हैं यार? Wild. Everybody's हजारों dancing की around, तादाद में लोग. trying to figure out what's going on. You can see behind me, they're all in a state of trance. परफॉर्म कर रहे हैं कुछ हाँ. This person is nearly gonna pass out. Right here is a giant tub Juice of है. orange juice that they're passing around. I had my shoes on and they yelled at me, oops. And in here is a temple where they're doing a blessing, literally shaking and quivering as he's blessing this lady. I've seen a lot of crazy in this world, but I've never seen anything like this. I'm getting blessed by this guy over here. I have not been blessed. Thank you. What do you think about Dussehra? This feels good. Nice. Why do the men dress the women? They worship like God, the goddess. Walking in a village somewhere, just following wherever they're walking. Through a combination of fasting, prayer, and music, the goddess of death enters the worshipper's body and controls their movements. उनके बालों वाला The person टेक्सचर possessed is unconscious from what he is saying or doing. The things I'm witnessing here makes me believe that Hindus are the most devoted believers on the planet. If this is intense now, I can't imagine what I will see later tonight. We are heading now to the beach where all the festivities are going to go क्या down. view है. You can see the lines and lines of cars and रश buses कितना ज्यादा behind me. फेस्टिवल की वजह Everybody से heading to the main event. बीच There's की a तरफ lot जा of रहे people हैं. here. I'm sticking my head just out the window and you can see the cars are driving like मुझे लगता है 3 काफी inches. डेज तक चलता है ये. It is 41 absolutely days. insane. 41 days की तो fasting थी. मुझे लगता है शायद उसमें ही होगा. on the beach. And look at I all don't these people think so. walking in. Come. Okay, what's your name? Rajesh. Rajesh. He stapled Jaiसे there's the Kali. tongue onto his काली wrist. माता. Is it hurt? Painful? No. We are now following Rajesh to the temple to see what's going to happen, what's going to unfold. Basically, a Kali is the most spiritual ones here, and these are the guys who are fasting for 41 days. And It's only the- 2:10 p.m. right now, which means for the next 12 hours, these guys are going to be here paying dedication on the beach to the Hindu goddess. You can see, like, it's this whole festival. There's food vendors, trampolines, entertainment. People मुझे camping कुछ out छोटे on the trail, बच्चे they're sleeping on the circus floor, कर रहे हैं. and a lot of people dressed up in different colors. It's basically like Coachella with no drugs. Rajesh is walking barefoot and it must be 100 degrees outside, dripping down the face in sweat. So many accessories on his body. I can't imagine how hot he feels right now. In front of me, I see बहुत tens of heavy है. thousands of people in the street, just masses of people. What is the god? Black Kali. Kali. Black Kali. But Kali is a goddess? God. This is the Black Kali's temple. Black Kali's temple. Black Kali's temple is there. They're throwing water on us. Yes. Rose water. Rajesh. Holy. Rajesh, come on. Mom. He said Rajesh. Mom. Our mom. 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 Yes, mother. He's your Our mom. mother. I called him by his name, Rajesh, and then his friend came up and said, no, we call him Mom. He's our mom. Interesting. Just a few minutes ago, I was walking with this guy and he was acting totally normal. And now he's completely in a state of trance, in another world. The fire is literally burning this guy's beard. I'm stuck in this side. Everyone's pushing me as I go by. People are carrying fire. फिर भी The यार, dude who is leading ध्यान the से- parade literally has a spear through his cheeks.
यार ये रियल है ना? Does that hurt? Does it hurt? Pain? Pain? Whatever just happened is the craziest thing I've ever seen in my entire life, and I don't say that lightly. Okay, we have just now entered the temple where they're parading through, screaming, dancing, crying, painting themselves. What's happening? पुलिस भी आई। As we walk through the temple now, they get more and more intense and more spiritual. Look at this. They literally need people to hold them up. Even as we come out of the temple, my friend Rajesh is still shaking. He has so many helpers like around him, holding him up and giving him support. Like they encourage going in a state of trance. It's a good thing. It means that you're closer to God. Are you okay? Okay. Are you okay? 2 hours ago I was walking with him normal on the street, and now he's just like has just been in a state of trance for these last 2 hours. You feel okay? Okay? No problem? No problem. Now I'm heading with Rajesh to the beach after he's made a pilgrimage here. We're going all the way to the वो water. मेन जगह पे जाएंगे। इधर शायद वो टैलेंट है भाई। यार ये बोटिंग। You can see the sea of people behind me. It is absolutely mind-blowing how many people are here. इधर As से they say, परफॉर्म India करेंगे। is the country of color, and behind me, I think you can see why. How do you feel right now? This scene is very happy to proud ये and वो happy राजेश। for this moment. Can you explain what's happening in your head when you're like this? He's speaking very spiritual. In and hope of this moment, he has very headache and he cannot open his eyes and anything. And everyone's staring at me because I am the only white person here in this entire festival, which makes it extra special. After dark, I am told the most powerful rituals occur on the beach. I wander around for an hour or so until the drumming बहुत starts बड़े back level up पे हो again रहा है। and spirits come out to play. It's so smoky, I'm literally crying. I don't know how these people can do this. These ladies are walking with fire. आंखों में पानी आ रहा है I can't धुएं even open up my freaking eyes. वो उस चीज को इतना फील करते हैं कि उसी के अंदर डूब It's hard to जाते हैं even ना। scratch the surface of what Dussehra means for the Hindu people. But by witnessing people pray and push their bodies to the extremes, I am reminded of what this festival is all about. The triumph of good over evil and the pursuit of inner transformation. I can definitely say that after being here and witnessing Dussehra over the last few days, I myself am transformed. हाँ, रिएक्शन करते हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये हमारे सामने फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई फेस्टिवल आया है। जिस तरह रिजवान ने शुरू में जिक्र किया, होली, दिवाली, ये चीजें वगैरह जो है ना, ये हम देखते रहते थे, काफी कॉमन भी था। हाँ, और ये वाला स्केरियस्ट फेस्टिवल है यार, ये कभी हमने सुना नहीं इसके बारे में। बट लेकिन ये कि लोगों ने जिस तरह एक रूप लिया हुआ था भगवानों का, वो बड़ा डिफरेंट था, वो कभी नहीं ऐसा देखा। मतलब समटाइम लोग लेते थे, जैसे याद है वो एक मूवी थी पीके में भी वो एक ना लेते थे अवतार, बट ये थोड़ा डिफरेंट था। ये इसमें ना काफी, अब इसमें ना कई मेल ना फीमेल्स भी बनी हुई थी, मोस्टली ऐसे ही था। और देखा नहीं कितना हैवी वेट उन्होंने कैरी किया हुआ था, और कई घंटे तक। और सच में समटाइम बंदा, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी और हेडिक भी हो सकती, वजन भी, और मेरे हिसाब से तो आदमी बीमार भी हो सकता है। बट वो थोड़ा एक स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाते हैं, तो शायद इस वजह से उनको फील ना होता और अच्छा फील होता है, वो अपने आप को खुद थोड़ा शायद वो उस समझ स्टेट में लेके प्योर जाते हैं, और वो अपने आप को गॉड के करीब महसूस करते हैं कि जितना ज्यादा वो उस स्टेट में जाएंगे। और हमें इसका पता नहीं है, बट ये वहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूज लेवल पे हो रहा है। जितनी वहाँ पे तादाद हमने लोगों की देखी मेरे है, हिसाब से हजारों क्या लाखों में होंगे। हाँ, कितनी पेनफुल थी। यार ये कहीं कुंभ का मेला तो नहीं, वो भी एक उसके करीब है, वो एक समंदर के या दरिया के करीब होता है। सुना होगा उसका नाम हमने, बट वो उसका कुंभ पता का नहीं मेले में कैसे तो मैंने होता है। सुना है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वो एक गैदरिंग है, ह्यूमन फिर कोई गैदरिंग, और जिसमें होगा। शायद कोई तकरीबन कोई 10-12 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ जी, लेकिन मुझे ये है कि एग्जैक्ट आप फिगर नहीं सही पता, कह रहे हैं, और उसका लेकिन
हाँ, वो उसको स्पेस से देखा जा सकता है। हाँ, मैं यही कहने लगी थी कि उसका ड्रोन व्यू देखा, वो भी इसी तरह से कलरफुल सा होता है जिस तरह इसमें बहुत ज्यादा और पानी वगैरह भी होता है, बहुत उधर वो ज्यादा आते हैं। स्पेसिफिकली उसको भी देखने कुंभ का। कुंभ का मेले में ना यार, वो उसमें ना समटाइम ना वो गुम हो जाते हैं। क्या नहीं, गुम क्या, वो लंबा है, मतलब वो 1-2 दिन का नहीं है, वो कई दिनों का मेला है कुंभ का। अच्छा, हाँ, मुझे उसकी फास्टिंग वाली चीज याद आ गई कि 41 डेज की फास्टिंग मैंने कभी भी नहीं सुनी कि आपने 41 डेज कुछ भी नहीं खाया हुआ। कैसे है? नहीं वो ऐसा होगा ना कि Specific time होगा हाँ, एक उसमें दिन कुछ ना का। कुछ ऐसे तो मर सकते हैं। हाँ, मैं कंटिन्यूअसली 41 नहीं, डेज नहीं, की नहीं, फास्टिंग समझ लो। टाइम और स्पेसिफिक अब आइटम तो होगी जिस पे अब allow जैसे भी हम होगी। 30 डेज मुस्लिम फास्टिंग करते हैं, तो जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम खाते हैं हाँ, और नहीं, उसके वो बाद तो मुझे समझ आ रहा है। इवनिंग में खाते हैं, हाँ। तो जिंदा रहते हैं ना नहीं 30 नहीं, दिन। वो मुझे हाँ। समझ आ रहा है, मुझे लगा शायद कुछ नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं, टाइप ऐसा नहीं। फास्टिंग है, तो इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। वहाँ लेकिन पे वो जो एक बंदा था जिसने वो आग यहाँ पे यार वो डेंजरस था, और एक जो तलवार, डाले, हाँ, रोड से कोई डाली। यार ये नहीं करना चाहिए यार। एक ने बैक में भी डाली हुई थी हाँ, अपने। असल में ना वो तो शायद एक्सपर्ट कर लेते, लेकिन जो देखने वाले हैं ना उनको तो डर लगता है ना, बिल्कुल ट्राई नहीं करनी चाहिए। छोटे दिल के भी लोग होते हैं। स्केरियस्ट था काफी हाँ। चीजें ऐसी। हाँ, और हमारे लिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंट और था। first time हमने देखा फॉरेनर है। जो बना रहे थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा डिफरेंट था वो। और बाकी अकेले पूरे थे वो हाँ। मेले में वो अकेले ही थे। हाँ, और कई जगह पे उनका ये डायलॉग था कि आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग, मतलब हाँ। उनको भी जो है उन चीजों की समझ नहीं वो आ भी रही एक्सप्लोर ही थी, कर रहे थे। एक्सप्लोर कर रहे थे। तो जैसे हम- देखने वाले हमें बताएंगे कि ये हाँ, इसके हाँ। डिटेल्स जो है ना, ये हाँ, कितने और वो दिन जो चलता है। कितने दिन चलता है, और वो जो लोगों ने जो भगवान के या देवी के अवतार जो लिए थे, रूप लिए थे। रूप। रूप बनाए हुए थे, वो कौन कौन से थे, क्या क्या नाम था हाँ, उनका? और लास्ट में जो वो एक याद है, बीच के करीब उन्होंने एक मैदान बनाया हुआ था। रातों के हाँ, उसमें। साइडों पे वो लोग थे, बट वो दरमियान वाला खाली था। हाँ, मुझे ऐसे। लगता है शायद उधर वो परफॉर्म करते होंगे, ऐसे- करते होंगे। ऐसे। ऐसा कुछ ये है। एग्जैक्ट अब हमें जो है ना वो मतलब Subscriber हमने बताएं। हमने ये वीडियो देख तो लिया, लेकिन और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो हमारे माइंड में आगे, थोड़ी क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिएट हो गई है। तो हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं, काफी चीजें अब हमें डिटेल में कमेंट्स में आने वाली हैं, तो हम उनको जरूर पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya।